All right. Chalaji, thank you very much again for coming to this class. आज की क्लास बहुत नेगेटिव है, ठीक है? क्योंकि हमने आज सारी नेगेटिविटी पढ़नी है। सारी तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन किसी हद तक जो भी पढ़नी है वो पढ़नी है। So we need to learn negations basically. Negations वकास in भाई को मिस the करूंगा फिर मैं। जी बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। नेगेशंस हमने पढ़ने हैं आज, तो उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश करते हैं एंड देन विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, नेगेशंस अरबिक में बहुत तरह से की जाती है। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड। तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेगेशन दोनों वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करती है। एक फेल का वर्ल्ड है, एग्जिस्ट करती है, इसमें फेल बेस्ड नेगेशंस होती हैं और एक इसम बेस्ड नेगेशंस होती हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे फेल की दुनिया से भी। ठीक है, दैट्स वेयर वी विल स्टार्ट। ठीक है, द हाउ टू नेगेट इन फेल वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब फेल वर्ल्ड के अंदर आपने देखा है कि पास्ट टेंस होता है, राइट? देयर इज अ पास्ट and there is a present. So you can negate in past and you can also negate in present. So there is a different category of negations in both the categories. In some cases you can also negate in the future. ठीक है, मुस्तकबिल में भी आप नेगेशंस कर सकते हैं। तो नेगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुरान का और अरबिक लैंग्वेज का, और इसको अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको डीपर लेवल पे समझें। ठीक है, सो फर्स्ट कम्स फर्स्ट, आई वांट टू एस्टैब्लिश सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेगेटिव सेंटेंस वर्सेस रेफ्यूटेशन। ठीक है, देयर इज अ सेंटेंस दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस एंड देयर इज अ फॉरबिडिंग। ये तीन चीजें हैं बेसिकली। अ सेंटेंस दैट कैन गो नेगेटिव, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, sentence that can go negative, that can do refutation and that can do forbidding. ठीक है, ये तीन तरह की चीजें। नाउ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अली डज नॉट ईट एप्पल। राइट, सो इसमें जो नेगेटिविटी आ रही है दैट इज डज नॉट। राइट, सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। It is not about identifying a negative trait of somebody. Yeah, it is just making the sentence negative. इसका positive counterpart क्या होगा? Ali eats apple. This is affirmative sentence. Not saying positive. Positive sentence would mean कि आप उसकी तारीफें करेंगे. Ali is really qualified and skilled in eating apple. That's positive sentence. ठीक है? Affirmative is a yes sentence. ठीक है? Yes sentence. तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, दे आर नॉट रियली गिविंग, देयर इज नो परमिशन एस्पेक्ट ऑन इट। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द सेम सेंटेंस, अली डज नॉट ईट एप्पल, एंड आई से डोंट ईट एप्पल, नाउ दिस इज forbidding, and you should be able to understand the difference between a negative sentence and a forbidding sentence. ठीक है, जो forbidding है that is about permitting, permissions और authorization, किसी चीज की इजाजत देना, राइट? सो इसमें आपकी जो नेगेटिव, इसको भी आपने नेगेट किया है विद डोंट, बट इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द एस्पेक्ट ऑफ परमिशन इनटू इट, whereas Ali does not eat apple is just information, it's some sort of statement or observation. ठीक है, that's the negative sentence, and the forbidding is about permissions. Now refutation जो होती है, refutation का मतलब है कि let's say there is a debate going on. One person is saying Ali eats apple, the other person is saying no, he doesn't eat apple. There is a debate going on. So इसमें एक debate का aspect है। ठीक है, एक point of कॉन्फ्लिक्ट है बीच में ना। तो when you have to
put down other person's argument, completely deny it and refute it, then that's the refutation sentence. इसमें डिबेट का एस्पेक्ट होना जरूरी होता है. So when there is a debate going, sometimes in the Quran, refutation is used because disbelievers are believing on something. Let's say sun is the god, and they're debating that's why sun is the god. If you have to refute that argument completely, that is refutation. That's another type of negative sentence. Yeah, इसको मैं इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह लिख सकता हूँ. Let's say we are having debate and somebody is saying to me कि नहीं, Ali eats apple, and I firmly believe कि Ali does not, and I want to refute. I will say no, Ali does not eat apple at all. मैं उसको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट अथॉरिटी के साथ रिफ्यूट करूंगा, तो दैट्स आल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस. सो इसमें दो एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में समझाने के लिए देयर दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि नेगेशन लाते हैं. शुरू का नो और एक बीच का नो. राइट, दैट्स रेफ्यूटेशन. इन तीनों के कंस्ट्रक्ट्स डिफरेंट हैं अरबिक में. आपने फॉरबिडिंग देखा हुआ है, ठीक है, यू हैव सीन फॉरबिडिंग. यू पोटेंशियली आल्सो टच्ड अपॉन द नेगेटिव सेंटेंस. तो उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उसके अंदर. Other things that we have done in the class before will start to come into play. सही है? So far so good. Clear है अभी तक? कोई question? Any thoughts? Nothing? Okay. Good. Now let's start with the past. हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं. पास्ट टेंस में आपको पता है हमारा टेम्पलेट जो फेल है वो है नसरा. ठीक है. Now this means he helped, as you know, and what we want to produce is a negative sentence. He did not help. That's what we want to produce. Okay, that's what we want to do. He did not help. Now इसको प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं बेसिकली. एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जस्ट सो वी आर ऑन द सेम पेज. हम लोगों की सबकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, so we do make mistakes in English. So he did not helped is wrong English. Okay, this is wrong English. Did not के साथ helped नहीं लग सकता. ठीक है. Even if Nasara means he helped, if you want to negate it, this will turn into help, because did not is bringing that past tense aspect. Okay, this is also past. Okay, just so we are on the same page. क्योंकि मैंने माजी में देखा है पढ़ाते हुए कुछ स्टूडेंट्स को they get confused on it. So just so we are clear, did not and helped do not go together. Okay. Now इसका जो सिंपलेस्ट तरीका है नेगेट करने का, वो एक लेटर एक इसम है बेसिकली अरबिक में, जो आप वेल नोन इसम है, आपको पता है, उसका नाम है माँ. यू हैव सीन माँ क्वाइट अ लॉट इन द कुरान. ठीक है ना. माँ बहुत ज्यादा यूज होता है, और माँ बहुत तरह का है अरबिक लैंग्वेज में. देयर इज माँ फॉर नेगेशन, और जी देयर इज माँ फॉर, इनफैक्ट नेगेशन कहूँ, लेट्स से रेफ्यूटेशन. देयर इज माँ फॉर रेफ्यूटेशन. ठीक है. देयर इज माँ फॉर क्वेश्चनिंग. देयर इज माँ फॉर there's ma for there's a ma that's called Mosul, ism Mosul, and there's ma called Masdariya, and so on. There are many mas. Mas have a ma hi, lekin it is used in various different ways in Arabic. It's a very important ism that you need to know, and आज हम उसकी एक first category पढ़ रहे हैं, which is the negation or refutation part. ठीक है. So in this case, the easiest way of refuting the past tense is you attach the ma with the past. Okay? So if you say ma nasara, okay, that means no, he did not help.
Okay? Because ma is largely used for refutation. Okay? But sometimes you will find ma and the past tense combination not translating it as refutation. Sometimes context dictate you something different. So you might see it translated as he did not help. Okay? He did not help. So at this point in time, we'll go with this translation. Okay? So when you attach a ma with a past tense, you are bringing did not in the sentence. Okay? The doer remains the same, the meaning remains the same, but to construct a sentence in English, you have to bring in the did not aspect and you have to change the helped to help. Right? इसी को अगर हम इस तरह प्रोड्यूस करना चाहें, मोहम्मद, let's say Muhammad did not help. Right? What do you think we could do? Any ideas? Any thoughts? Ma nasara Muhammad. Muhammadan. Muhammadan. Muhammad? Dan din. Muhammadun. Muhammadun outside door हो जाएगा. Outside door. Ma nasara Muhammadun. Muhammad did not help. Right? So the concept of the fail and the outside doer and everything remains the same. But this ma is specifically bringing the did not aspect. Okay? Context will tell you it is refutation or is it just a negation. Ma is mostly used for refutation in the Quran. Okay? But there can be aspects where it is used just as a negation. So that's one way of negating and producing in past tense, the negations. Okay? There is another way of producing negation. Basically, you produce negation in past tense using present tense. Digest this. Negation in past tense, but you use present tense for that. उसकी एक रीजन है. उसकी रीजन ये कि आपने एक हर्फ पढ़ा है, उसका नाम है लम. Do you remember what this harf was? किसी को याद है क्या था ये? नेगेशन में पढ़ा था. नेगेशन के अंदर ही था. नेगेशन तो हमने आज से पहले कभी पढ़ी नहीं, ये तो पहली दफा. नहीं, वो उसमें था, क्या कहते हैं उसको, लाइट, फेल को लाइट और लाइटेस्ट. लाइट उनमें से लाइटेस्ट के अंदर था. इन्ना अन्ना कान्ना लम. ये तो नसब या नसब है तला भाई. आप ड्राइविंग करो. अपनी बना ली पीछे. आप ड्राइविंग करो तला भाई. अजीब यार, सारा साल की मेहनत पे पानी फेंक रहा है यार तला. अरे यार बोनस पॉइंट दे दो यार. वो था लम लमा लाम भी था इसमें खाली. इन लम लम्मा वल फल ली. रिमेम्बर? जी. इन लम लम्मा वल फल ली. ये याद होने चाहिए बच्चों. ठीक है, ये याद होने चाहिए. इन लम लम्मा वल फल ली. इसका मतलब क्या था, याद है किसी को? अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द क्लास. मैं बता दूं. एक्सट्रीम नेगेशन. नो, इट मेंट डिड नॉट. ठीक है, डिड नॉट. सो ये वो हर्फ है जो प्रेजेंट टेंस फेल को लाइटेस्ट बनाता है. ठीक है. सो इफ यू हैड यंसुरु, ठीक है, एडिंग अ लम टू इट would make it what? Yansur. ठीक है, lam yansur. Now if yansuru meant he helps, the one with lam would mean he did not help. Lam yansur means he did not help.
This is another negative sentence. Now ये sentence जो है, this is also negating in the past. You're talking about the past. He did not. एक वाकया जो हो चुका पहले, उसको आप उसके बारे में आप negation की बात कर रहे हैं. ठीक है. So this is, although it is talking about the past, but you are using a present tense majzoom, meaning the lightest. Okay? With lam. Clear है यहां तक? जी. ठीक हो गया. Okay. They all did not help. They all did not help. ठीक है? That's what we need to produce. There are two ways of producing this. ठीक है? And I want your help to produce them. ठीक है? So what is the fail I could be using here? Think about it. They all did not help. So fail क्या है इधर? Past tense. यंसुर नसर. उसमें दो वही हो सकते हैं, प्रेजेंट का भी यूज कर और सकते वो हैं, दे पास्ट है का ना भी तो कर सकते हैं. Let's start with the past tense one. ठीक है? Let's start with the past tense. So what is the fail in past नसरू. tense? नसरू. It's nasaru, because it means they all helped, right? They all helped. ठीक है? They all helped. And now I want to say they all did not help. They all did not help. Ma nasaru. Correct. Ma nasaru. Correct. They all didn't help. Could there be another way? प्रेजेंट से भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? उसमें अब हम प्रेजेंट का लेंगे, यंसुरून. Yansuruna. ओहो, कीबोर्ड. Yansuruna. Okay. Now what should I do? अब क्या इसको वो लगेगा यहाँ करेंगे से? लम. लम यंसुरूना? नहीं, इसमें वाव भी है. There's a wow here. लम यंसुरू. Lam yansuru. They all didn't help. Both mean the same thing. ठीक है? But the first one in some cases will be used for refutation. So the पहला वाला है, इसके अंदर आप कह सकते हैं no they all did not help. This is more refutation in the context of debate. It could also be used as they all did not help, just like above. जबकि नीचे वाला एक standard negation है. So what I'm telling you, when you negate in the past tense, you used either the ma with the past or lam with the present to produce a negation in the past. Clear है यहाँ तक? जी. Right. हमने दो टर्म्स यहाँ पे हम करेंगे. एक टर्म है नाफिया. नाफी कैसे लिखते थे इसको? Wait a second. हाँ, नाफियतुन. नाफियतुन और नाहियतुन. दो टर्म्स हैं. Nafiya and nahiya. The nafiya is the negation. And the nahiya is forbidding. जैसे आप उर्दू में कहते हैं नहीं, उर्दू का लफ्ज नहीं है, that is coming also from the same word. So nahiya, नहीं. ठीक है? So forbidding is nahiya and negation is nafiya. So जब आपने forbidding statements पढ़ी थी तो हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी. We said that when you have to negate something, that you say la tansur, you make it lightest, right? यहाँ इस तरह करके la tansur, don't help. But we said that you could have something like this, la
तंसुरु, याद है ये चीज? लाइटेस्ट नहीं होगा फेल इस केस के अंदर। और हमने कहा था कि इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज नॉट फॉरबिडिंग, दिस इज नेगेशन, स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन। जी वो हुन्ना और उसके केस में नहीं थे, दो ऐसे थे जो कि जिनके केस में वो लाइटेस्ट नहीं होता था, उसकी फॉर्म सेम रहती थी। गुन्ना से इसका ताल्लुक नहीं था, इसका नहीं ताल्लुक गुन्ना था। नहीं, हाँ हुन्ना जो बेसिकली प्रोनाउन थे, अच्छा दो अच्छा, ऐसे प्रोनाउन थे हाँ हाँ, जिनमें जो टेंस चेंज नहीं होती थी। नहीं नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आता हूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमने फॉरबिडिंग की थी, जब हमने कहा था ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट, दैट वाज द फॉर्मूला, राइट? सो दिस स्टेटमेंट ला तंसुर meant don't help, it meant don't help, this is forbidding statement। लेकिन हमने कहा कि if you have the law and you do not have the lightest, then it's not a forbidding statement, it's just a normal statement, observation, it's a negation, it's a negative statement, that's it। This meant he does not help, that's what we said, he does not help, it's just a negative sentence। ठीक है? तो ये वाला जो ला है, that does not transform into the lightest, जिससे lightest नहीं होता फेल, this one is basically the la nafiya, this one, because it is giving you the negation, this is la nafiya, इस particular la को nafiya कहा जाता है, ठीक है? And this law that actually produces the forbidding is called la nahiya, ठीक है? ये two important terms है, आपको पता होनी चाहिए as students of Arabic, you should know, and you should know the difference। there is something called nafiya which is negating, and there is something called nahiya which means forbidding, ठीक है? आपने नाहिया पढ़ा हुआ है, ला नाहिया यू हैव लर्नड, ला नाफिया यू हैव आल्सो लर्नड, ठीक है? इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। अब जब तला आप बात कर रहे हैं, वो बात ये थी कि हमने कहा यंसुरु जो है, यंसुरु, नाउ यंसुरु चार्ट जो है आपका, जब आप हुन्ना पे पहुंचते हैं तो वो बन जाता है यंसुरना, राइट? And we said the normal light and lightest form of yansurna is the same, it doesn't change, okay? So regardless आप कुछ भी इसके साथ लगाएं, yansurna and tansurna, hunna and antunna does not change। So if I have to say, if I have to say for example they all feminine did not help, how would I say that? There are two ways of doing this। One way of doing it is with present tense, let's do that first। So present tense के साथ हमने क्या किया था? lam लगाया था, lam, and we pick up the hunna version which is yansurna, yansurna। You are not going to kill the noon because they don't change, that's what we did, जिसमें हम कह रहे थे change नहीं होता, ठीक है? Because that's also the light and the lightest form। lam yansurna means they all feminine did not help। क्लियर है तला यहाँ तक? याद आ गया? यस यस। ठीक है? और जो हमारा पास्ट टेंस था, that was nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, that was nasarna, so it will become ma nasarna, ma nasarna, they all feminine didn't help। So when you're using ma, you're attaching it with the past tense, when you're using lam, you're attaching it with the present tense, but both of these negations produce the negations in the past, not in the present and not in the future। This is negating in the past, when you have to negate in the past, ठीक है? जब आपको कुरान में माँ नजर आए, तो उसका मीनिंग ऑलवेज नेगेशन नहीं होता, ठीक है? माँ मैंने जैसे आपको बताया मल्टीपल टाइप्स के हैं, और इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और
हर मा नेगेशन नहीं होता, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है व्हाट टाइप ऑफ मा इट इज, ठीक है। अब अगर इस माँ को मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे यही वाली एग्जांपल उठा लेते हैं, माँ नसरना, ठीक है। एक मीनिंग माँ की होती है नेगेशन, जो कि रेफ्यूटेशन है, नो, नो वाली जो मीनिंग है, ठीक है। और एक मीनिंग माँ की होती है वॉट एवर, वॉट एवर, ठीक है। तो अगर आप इस माँ नसरना को निगेशन मीनिंग्स के साथ देखें इसको, तो यू माइट से कि इट इज रेफ्यूटेशन व्हिच मींस नो, दे ऑल डिड नॉट help. But if you see it as a whatever meaning, which is the ism mausul meaning, then you would see is you would do something like this: whatever they helped. Okay, और इसके आगे कुछ और मजीद हो सकता है जो इसकी सेंस बना रहा हो, ठीक है। So completely different, एक ही स्टेटमेंट है, but it can be interpreted in two different ways, and the context normally tells you what type of ma that is. आपको जरा context को एक deeply थोड़ा सा analyze करना पड़ता है. Is the tone, is the messaging going negative on the negation side or a normal side, or refutation side or questioning side? Okay? तो ये सारे aspects होते हैं. तो whenever you see the ma, do not डायरेक्टली कंक्लूड कि इट इज अ नेगेशन और रेफ्यूटेशन, ठीक है। सो थोड़ा सा और डीप थिंकिंग हमें इसमें करनी पड़ती है, जबकि लम के केस में इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। आपको एक सारे सबको सूरा आती है, आप कहते हैं लम यलिद, लम यलिद व लम यूलद, यूलद, ठीक है ना। लम यलिद व लम यूलद, these are two negations. Yalida means to beget, यानी to be born, ठीक है, और या जन्म देना किसी चीज को, ठीक है। सो लम यलिद वलम यूलद, he begets not, he doesn't father somebody, वलम यूलद nor is he fathered. नाउ इसका जो पहला केस है यहाँ पे यलिद, that is an active present tense. यूलद is a passive present tense, ठीक है। It's a passive, it's you beginning and fatha in the middle, second last letter, ठीक है। And they both are negated with lam. Lam yalid means he did not father, and lam yulad, he was not fathered, because it's a passive. Okay, जो आप सूरह इखलास में पढ़ते हैं. So it's a very good example of this negation, ठीक है। And also how negation comes together with the passive and active, ठीक है। So ये हम सबको याद होती है ये वाली आयत। तो now that you know what's going on here grammatically speaking, ठीक है। So Allah is very beautifully used an active versus the passive with the same type of negation, ठीक है। कोई क्वेश्चन? क्लियर? सब क्लियर है? जी फाद भाई। हाँ फाद क्लियर है, एक दफा दोबारा देखना पड़ेगा वरना अदरवाइज इज क्लियर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक और चीज बता देता हूँ, फिर हम पॉज कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद करेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद दिस। हम लोगों ने जब ला पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था ला यन, इट्स मोर ऑफ अ रिमाइंडर, ला यन शुरू हमने पढ़ा था जब, और हमने कहा दिस इज एन ऑब्जर्वेशन और अ स्टेटमेंट, मीनिंग ही डज नॉट हेल्प, ही डज नॉट हेल्प, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रेजेंट टेंस नेगेशन, ला प्लस प्रेजेंट टेंस इज अ प्रेजेंट टेंस नेगेशन, ठीक है। ही डज नॉट हेल्प। हमने इसकी एक और फॉर्म पढ़ी थी, हमने कहा कि जी ला यंसुर। Now, when we were doing the
when we were doing the forbidding, we said it's la plus second person lightest. Second person lightest. उस वक्त forbidding होती थी, because forbidding can only work in the second person. Second person. But this one is not second person. This is third person. ठीक है? So एक la yan suru है, which is a standard observation statement. But there is one la yan sur where you have made the third person lightest, which is something unusual. It is neither forbidding nor observation statement. ठीक है? It's something new. इस केस के अंदर this is more of a recommendation. So this is he should not help. The aspect of should comes here. ठीक है? जब आपको ला के साथ थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन लाइटेस्ट नजर आ रहा हो, so that is more of a should not sentence. ठीक है? Kind of recommendation sentence. ठीक है? तो तीन तरह के laws हैं जो आपने जहन में रखने हैं, याद रखने हैं आपको. एक law for forbidding, there is a law for observation or any statement. ठीक है? And then there is a law for, let's call it recommendation. याद रहेगा उससे. तीन तरह के laws हैं. ठीक है? और ये तीनों laws fail के साथ यूज होते हैं. There is a fourth law that you all also know, which is used with isms. It's used with isms. जैसे हमने शुरू में एग्जांपल की थी ला रईबा फीही. When do you negate? Categorical negation वाला जो aspect था, when is the ism light? When it is categorical negation. So this law is used with ism for categorical negation. It makes the ism nasab and light. Okay, so these are four laws that you see in the Quran. Okay, forbidding, observation, recommendation, and the one used with isms. Okay, all of them are used for negation of one way or the other, and one of them is used for forbidding. ठीक है? So जब भी आप ला को देखें तो ऑब्जर्व करें कि उसके साथ क्या अटैच्ड है. सबसे पहले फेल अटैच्ड है या नहीं है. अगर फेल अटैच्ड नहीं है तो इट हैज टू बी द लॉ ऑफ इसम्स. इसको कहते हैं ला नाफिया लिल जिन्स, जो इसम वाला लॉ है कि फॉर कैटेगोरिकल नेगेशन बेसिकली. अगर इसम अटैच नहीं है उसके साथ तो इट हैज टू बी वन ऑफ दीज थ्री लॉज, आइदर फॉरबिडिंग, ऑब्जर्वेशन और सम सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन. सो रिकमेंडेशन में आपको पता है कि यू विल हैव lightest fail, but it would be either third person or it could be any person. Let me just say like this, any person. Okay, third person, first person, even second person. जबकि observation statement के अंदर you normally have any person too. It could be any person as well. Your context is going to tell you, is it a recommendation going on or is it just a sentence being thrown as an observation? जबकि forbidding के केस में you will only have second person. ठीक है? So आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा the use of, आज हमने देखा मा प्लस पास्ट. आज हमने देखा लम प्लस पास्ट प्लस प्रेजेंट. आज हमने देखा 4 types of law. ठीक है? All of them are producing negations, and one of the law produces forbidding. ठीक है? तो अभी आप देख लें, सिर्फ ये चार तरह की negations सिर्फ law के साथ है. ठीक है? और उसके बाद 2 तरह की negations ये हैं ऊपर लम और मा के साथ. There are further types of negations that we will do inshallah in the next class. ठीक है? और जब हम इसम वर्ल्ड को ओपन अप करेंगे, जिसमें इसम की एक पूरी दुनिया है, जिसमें नेगेटिंग विद इसम
that is another world. We have to touch upon it, inshallah, later on in the future. But it's a very important topic and used quite a lot in the Quran. So when you read the Quran next, just try to observe what you see. Google or just open Quran.com or Tanzil.net and try to search lam or ma and try to see what type of ma or lam it is. Okay? Any questions? No? नहीं फाद आई थिंक एक दफा मैं रिवाइज करूंगा फिर क्वेश्चन हुए तो पूछूंगा जी बिल्कुल ठीक हो गया चलो सही है इफ देयर इज नो क्वेश्चन कंक्लूड कर लेते हैं वी डोंट हैव अ क्लास नेक्स्ट वीक राइट कल नेक्स्ट वीक तो स्किप करेंगे हम सब ऐसे ही जी इंशाल्लाह यस इंशाल्लाह ठीक है आपका रेडिंग की तरफ आने का कोई इरादा है फहद भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं प्लीज इफ यू डोंट माइंड एक मिनट लेट मी टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट कहाँ गई